Uttarakhand in particular, which is made up of soft rock, as you mentioned. Will this now open, more scrutiny, more caution that needs to be, put in place, especially when it comes to, taking up, first of all, this project and also looking at other projects in and around the Char Dham Yatra? Look, whether it's a national construction of a road or whether it's a construction of the tunnel. Okay. Both the things, the rocks, the dip direction of the rocks, the strike of the rocks, the faults in the rocks, the joints in the rocks, the rock mass rating of the rock, the slope mass rating of the rock, all these things have to be assessed very carefully. And I have been telling you at a very smaller scale, so that each and every point what could be the problems which can come up, because sometimes as we could see that the shear zones are covered by the tablets and we don't understand what is down. So you have to use there are many scientific methods which have come up now, and with that you can change the things. It's not construction and it's a time of the development for India, whether it is Himalayas or the country itself. But you have to be very careful. Scientists and the engineers should work together, especially the geoscientists and engineers. Rather than making shorter routes, you should be more careful about the rocks and more careful about the structures in the area, the slope of the area, the fragility of the area, the ecosystem of the area, and especially areas where you have high rainfalls. For example, Kedarnath, or you can say in Sikkim, the Gangtok area. All these areas are vulnerable to even the cloudbursts and the heavy rainwater. So all these things create a double problem or triple problem when you make these kind of tunnels. Okay. Also a quick word, now that we look in hindsight, what could have prevented this particular Uttarkasi tunnel collapse? Or what are the lessons that we learn? Well, live visuals there coming from Uttarkasi at this point of time. As we mentioned, beds, chairs already, ambulances ready. They're all being kept ready inside that Silkyara tunnel. The 41 trapped workers trapped for the last 16 days expected to come out anytime soon. So medical staff there in large numbers, ambulances waiting for things to happen. Well, quickly, a quick update there from the ground. Akshit Katyal, the MD of Accurate Concrete Solutions, a short while ago, has said that the breakthrough has been achieved and the pipe has passed through. So fresh visuals there from ground zero, non-stop coverage that we continue to hold there on the developments there in Uttarkasi. पाइप थ्रू हो चुकी है। पाइप एनव्यूगा ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत ही टेक्निकली साउंड वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने ये सारी ऑपरेशंस को थ्रू कर दिया है विदाउट एनी हर्डल। कल रात से लेके आज सुबह तक उन्होंने धीरे धीरे बिना कोई जल्दी दिखाए हुए समझदारी से पूरी पाइप पुश करके ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। क्या आर पार हो गया है? आर पार हो चुका है, ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। Well, live visuals there coming from the Silkyara tunnel. We are getting you news as it breaks there from that Silkyara tunnel collapse that's taken 16 days, 17 days. We are into the 17th day of the rescue and relief operations, and a big breakthrough that's coming there in Uttarkasi. Latest visuals of the Uttarkasi tunnel rescue there that's underway to rescue those 41 trapped workers inside. Ambulances ready, trapped workers should be out anytime soon. The temporary medical facility that's been expanded inside the tunnel too. After evacuating these trapped workers, health training will be done at the same place for these workers in case of any problems. 8 beds have been arranged there by the health department and a team of doctors and experts there at that Silkyara tunnel. As we mentioned, the pipes there have been pushed without any further hurdles, and a big breakthrough being achieved there. And the work to rescue these laborers have started.
at least 3-4 phases in this particular rescue operations. That's why you see a delay, especially when it comes to that workers coming out. So 3-4 phases in which this particular rescue operation is taking place. The teams of NDRF, SDRF inside that Silkyara tunnel, the laborers or the workers, the 41 workers will be out anytime soon. There is a ramp that needs to be made, and once this ramp is ready, you know, this particular trap workers, they, you know, are in good health and they will be made to come out through those stretchers. Well, Dibendu there still with us. Dibendu, you know, is there a window now, you know, for these people, especially, you know, the families of those workers who've been trapped inside? Is there a sigh of relief? And who would they love to thank? Because it was hoping against hope, you know, that they would get an opportunity to see their loved ones. They got opportunities to speak to them, but they've now got an opportunity to see them. You know, who would they thank for this, you know, Herculean task, considering, you know, the geological, technological, and also climatic conditions, you know, that were a huge challenge in this rescue operation? Well, of course, you know, the family members are perhaps to begin with thanking the god of the mountain, which is the Bhoknath Dev, which is considered as a very holy, sacred place for many here in the mountains. So we have been here for the last couple of days. So people here are saying it is only with the blessing of this god called Bhoknath Dev, the local deity here. Well, it's a significant break. People have been rescued, we'll and the blessings of the Almighty. Well, I think there is surely there are, you know, almost 10 times the number of telephone calls that are taking place from that particular site. And surely there we're going to touch base with our correspondent Dibendu Mondal there on the ground. A significant breakthrough that's taken place. Rescue teams successfully penetrating the debris and laying the pipes to evacuate the workers trapped for 17 days inside that collapsed tunnel in Uttarakhand, Silkyara. Well, non-stop coverage on that particular rescue operations there in that Silkyara tunnel collapse continues here on DD India. Stay with us. Don't go away. We're going to be right back after a short breather. Turning crisis into opportunity, transforming ideas into action, stories of real change, tales of sustainable solution. This series is going to tell stories of such change makers. Watch Change Makers. Well, getting you live up. Well, at this point of time, let's dip deep into this particular press briefing on the Uttarkasi Tunnel rescue operations now and head live to the National Media Center. That briefing will be given by General Hasnain sir. Over to you, General Hasnain. Thank you, Manish Saab. Am I audible at the back comfortably? Thank you. Thank you first of all for your patience. आपने इंतज़ार किया 15 मिनट. मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए.
should have it by military precision. We should have been here at 4 o'clock. पर 15 मिनट हमने डिले किया, उम्मीद के साथ कि हम आपको और खबरें दे सकें, मगर अभी वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू येट गिव यू एनीथिंग ऑफिशियल. तो हम आपको बताएंगे जो स्थिति है, एग्जैक्ट स्थिति जो इस वक्त है. बिफोर एनीथिंग एल्स, वी आर नियर ए ब्रेक थ्रू बट नॉट येट देयर. अब 58 मीटर, कल मैं आपको बताया था कि 47 से थोड़ा सा ज्यादा 47.248 मीटर्स अंदर गए थे, और उसके बाद से मैनुअल वर्क हैज कैरिड ऑन. जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको, उसको काटा गया है, कटर्स के साथ निकालते रहे. रात भर काम हुआ है इसके ऊपर, और टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं, बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एंक्लोज स्पेस में कर रहे हैं, और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है. दे हैव बीन एबल टू टेक इट टू 58 मीटर्स विच इज अ फिनोमिनल अचीवमेंट, आई वुड से, कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है. दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट लाइक एज इफ अ मशीन हैज बीन वर्किंग. और इसके बावजूद अभी हम 58 मीटर पे हैं. पाइप पीछे से पुश होता गया है विद द हेल्प ऑफ द ऑगर मशीन, द प्रेशर ऑफ द ऑगर मशीन, एंड वी आर होपिंग अंदर 2 मीटर तकरीबन लगेगा, और अंदर पुश जब होगा तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं. ये खबर तो जरूर आई है, इसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से लोगों ने कहा है कि आवाजें आ रही हैं काम होने की. जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा, जहां पर टनल निकलेगा, वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक. तो ये सब बहुत पॉजिटिव खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त. मगर याद रखिए कि अभियान जब इस तरह का चलता है, जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे. किसी चीज पर भी प्री मैच्योर कार्रवाई, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा. इट विल बी अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल्स. तो इसलिए पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आपको याद दिला दूं, अंदर 41 हैं, बाहर बहुत लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में. उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उतना ही महत्व रखती है जितना अंदर वालों की है. सो वी आर नॉट इन एनी हरी, मगर हम अपनी पाबंदी के मुताबिक मीडिया से मिल रहे हैं. 4, सवा 4 बजे आपको बता रहे हैं ये कि ये स्थिति इस समय है. इसके ऊपर मैं ये भी बता दूं कि ये एफर्ट जो है, डिस्पाइट मेनी हर्डल्स, बहुत बाधाएं आई हैं इसमें. बिल्कुल जैसे एक अभियान के अंदर होता है कि अभियान में प्लान, ऑपरेशंस के अंदर प्लान बनाए जाते हैं, तजवीज़ें बनाई जाती हैं, मगर जब जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है वो तजवीज़ जो है वो नष्ट हो जाती है. उस तजवीज़ को दोबारा रिव्यू करना पड़ता है, और यू हैव टू कीप रीमेकिंग योर प्लान्स. बिल्कुल वैसे ही हुआ है, वैसी स्थिति यहां हुई है. आप देखें, पूरे 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन हो गए थे. कहीं कहीं सामान, कहीं कहीं मशीनें फंसी हुई थी, उनको सुपर ह्यूमन एफर्ट लग रही थी यहां पर लाने के लिए. गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो शायद इसके अंदर जुटा नहीं था. बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां से शुरू अगर करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, which has been the core ministry involved in this whole thing. जब 12 तारीख को इसकी खबर आई तो सबसे पहला जो शायद हमने जो कम्युनिकेशन किया था वो रेलवे बोर्ड, क्योंकि सबको मालूम है कि रेलवेज के पास बहुत एक्सपर्टीज होती है. टनलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला, उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है. तो द फर्स्ट थिंग वाज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज फॉरवर्ड, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड एंड डिफरेंट एजेंसीज हैव जॉइंड इन फ्रॉम टाइम टू टाइम. इंडियन एयरफोर्स का काम, एनडीआरएफ का,
जिसकी 2 टीम वहां पर लगातार काम कर रही हैं. ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट द एनडीआरएफ हैज बीन इन्वॉल्वड विद. बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए, बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं, सड़कों को ब्रॉडन किया है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी, अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं वहां से मीडिया बात कर रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी वहां से इंप्रूव की है. और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें. राज्य सरकार, देयर इन्वॉल्वमेंट, एसडीएमए, एसडीआरएफ, उत्तराखंड की एसडीआरएफ जो है बड़ी मानी हुई एसडीआरएफ है, बीन इन्वॉल्वड इन मेनी सच डिजास्टर सिचुएशंस इन द पास्ट. और आखिर में मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं. आई थिंक दे हैव डन अ मार्वलस जॉब, एब्सोल्युटली. मगर ये सब तब मुमकिन होता है व्हेन द डायरेक्शंस फ्रॉम द टॉप आर एब्सोल्युटली क्लियर कट. अगर डायरेक्शंस हैं ऊपर से, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप मानिए प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर, मुआयना किया पूरा, टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, गेव डायरेक्शंस, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत थी उस पर डायरेक्शंस दिए, बात की, अंदर सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर. ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट जितनी रिसोर्सेज, जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना, दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर, along with of course the Ministry of Roads, Transport and Highways. जनरल वीके सिंह साहब वहां खुद मौजूद हैं, ज्यादातर वक्त वहीं पर मौजूद थे. और यहां तक कि जहां पर भी एक्सपर्टीज भारत में है, जहां पर भी जो कोई ऑफर कर रहा था उसको एक्सेप्ट किया, उनको एनेबल किया वहां जाने के लिए. बड़ी खुशी है, जनरल हरपाल सिंह, पुराने हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ, जिनको बहुत तजुर्बा है टनलिंग का, उनको भेजा गया वहां पर, वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं. तो इस तरह से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ा. मैं समझता हूं इसका बहुत दिनों से हमने शायद इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखा है. अब मैं आपको बताऊं कि कल शाम से क्या क्या चीजें हुई हैं वहां पर. ये सब जो आपको बताया है मैंने, वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई. अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है. ऐसा कुछ नहीं है. जितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस अपनाए हुए हैं अभी तक. 45 मीटर्स तक वो ड्रिलिंग पहुंच गई है. ये रिडंडेंसी के लिए है कि अगर किसी भी हालत में आखिरी क्षण तक अगर हमको कामयाबी नहीं पाई, कहीं नहीं मिली, तो उस हालत में ये 45 मीटर जो गए हैं ये बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल जो है वो हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्व बहुत इसका रहेगा वहां पर. बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं, ब्लास्टिंग की भी चल रही है. तकरीबन 12 मीटर वहां पर अचीव हो गया है. जो बाकी मशीनरी आ गई है उसको अभी स्थिर रखा हुआ है कुछ जगहों पर, मगर जैसी जरूरत पड़ेगी अगर, तो वो सब मूवमेंट वो भी शुरू हो जाएगा. मैं आपको बताता हूं चंद एक बातें कि जब इवैक्यूएशन फेज आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आएगा, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ही आएगा. तो एनडीआरएफ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 टीम, 4 जवान की टीम, 12 लोगों की वो बनी हुई हैं, अंदर जाएंगी ऑर्गेनाइज करने के लिए. ये पूरा वो फ्रेश है, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर. एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी. साथ में जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, पैरामेडिक्स, वो जाएंगे अंदर. एक पूरा मेडिकल प्लान बनाया हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड पर. पूरा जो लेबर है उसको ब्रीफिंग उनको इसके मुताबिक दी है. स्ट्रेचर्स के ऊपर, स्ट्रेचर्स के रिसोर्सेज वहां पर, स्ट्रेचर अगर किसी हालत में फंस गया
तो वो कंटिजेंसी में किस तरह से उसको निकाला जाएगा, ये सब भी देखा गया है। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। पोस्ट इवैक्यूएशन जो है, जब सब के सब निकल गए हैं बाहर, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी भी वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर, बड़ा वाला डबल रोटर का हेलीकॉप्टर, वो चिन्यालिस और जो एयरफील्ड है 30 किलोमीटर दूर, वहाँ पर हेलीपैड भी है, बिल्कुल साथ में हेलीपैड भी है, वहाँ खड़ा हुआ है। उसका लास्ट टाइम है 4:30 बजे। उसके बाद वो जो है रात के वक्त नहीं फ्लाई करेंगे उसको। 4:30 बजे के बाद अगर ये डिले हो गया, डिले हो रहा है इस वक्त, तो अगले दिन सुबह उनको लाया जाएगा। वहाँ पर होल्डिंग फैसिलिटी है, 30 बेड की फैसिलिटी है वहाँ पर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। और 10 बेड की फैसिलिटी वहाँ पर साइट पर है, जो अभी तैयार हैं। तो इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल वेलफेयर की तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, वो सब ठीक रहेगा। रात के वक्त चिनूक हालांकि फ्लाई तो कर सकता है, मगर मौसम भी इतना ऐसा नहीं है, और इतनी, मैं समझता हूं इतनी अर्जेंसी भी शायद नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो रात के वक्त 1 या 2 कुछ एम्बुलेंस के अंदर जल्द से जल्द नीचे ऋषिकेश उनको लाया जा सकता है। साइट के ऊपर ट्रायज किया जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, जैसे कैजुअल्टी प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है। हालांकि ये कैजुअल्टी नहीं है, मगर उसके बाद लाकर उनको जब नीचे हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे एक्चुअली, तो 48 से 72 घंटे की मॉनिटरिंग होगी सबकी। क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी इतनी देर तक आइसोलेशन में, तकरीबन आइसोलेशन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, तो उसके ऊपर अलग अलग किस्म के असर आते हैं, बेस्ड अपॉन योर फिजियोलॉजी, बेस्ड अपॉन आपके साइकोसोशल मेकअप क्या है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी के ऊपर असर ज्यादा हो, जो कुछ घंटों के बाद साबित होने लगे, जस्ट टू फोरक्लोज दैट पॉसिबिलिटी। ये मॉनिटरिंग तकरीबन 48 से 72 घंटे तक चलेगी। मैं समझता हूं कि मैंने ज्यादातर चीजें आपके लिए कवर कर ली हैं। इसके सिवाय के मैंने आपको सिर्फ ये नहीं दिया है कि फाइनल सिग्नल नहीं दिया है कि थ्रू एंड थ्रू रोशनी आ गई है, टनल बन गया है। मैंने आपको आखिर में मैं बताता हूं कि 2 मीटर अभी भी जो फाइनल पाइप्स का पुश था, करना था, वो फाइनल पुश अभी भी हो रहा था जब हम उठकर यहां पर आए। मैं समझता हूं कुछ वक्त लगेगा, अरसा लगेगा, इसके बाद भी शायद आपके पास खुद फोन कॉल आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हमको सबको इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं हैंड ओवर करता हूं चौहान साहब को, कुछ बातें उनकी तरफ से टेक्निकल चीजों के बारे में वो आपको सुनाना चाहेंगे। सर, मैं पुनः एक बार, आपने जो होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच की बात कही सर, उसके बारे में कुछ और बताना चाहूँगा सर कि भारत सरकार की सभी जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें उन्होंने अदा किया है सर। जैसे NHIDCL तो रोड मिनिस्ट्री की ही ऑर्गेनाइजेशन है सर। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड सर पावर मिनिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड जो टनल इत्यादि बनाने का काम करती है, रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत बड़ा अच्छा काम किया। ONGC पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है।
और टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इन सब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने बेस्ट रिसोर्सेज, इनको जो जो जिम्मेवारी दी गई, इसमें अपने बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हो या कुछ भी स्किल हो, देश के किसी कोने में भी हो, उसको उन्होंने एक द्रुत गति से लाने का जो काम किया है, प्रयास किया है। और इसके लिए सर होम मिनिस्ट्री का भी बड़ा सहयोग रहा, जो पूरे देश के अंदर ग्रीन चैनल बनाने के लिए उन्होंने, चाहे वो रेल से आ रहे हों, चाहे वो इक्विपमेंट बाय प्लेन एयरफोर्स के माध्यम से या अन्य चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हों, या वो जो है बाय रोड आ रहे हों, हमारे नेशनल हाईवेज के माध्यम से आ रहे हो, इसकी प्लानिंग देश के प्रत्येक डीएम और एसपी से कोऑर्डिनेट करना सर, इसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण। और इसके लिए प्रत्येक दिन सेक्रेटरी रोड के अंडर में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी कि किस किस एजेंसी ने क्या क्या कितना काम कर लिया और आगे आने वाले 24 घंटे में उनका क्या प्लानिंग है, उनको क्या क्या काम करना है, क्या उन्हें कोई कठिनाई तो नहीं महसूस हो रही है। और दूसरा ये एक टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म भी था कि जैसे कुछ सॉल्यूशन जो थे वो एनजीसी को मालूम थे, कुछ आरवीएनएल को मालूम थे, कुछ एनएचआईडीसीएल को मालूम थे, तो जब कंट्री के बेस्ट टेक्निकल ब्रेन एक साथ बैठते थे तो सॉल्यूशन भी निकलते थे। तो ये इसी तरह से सर आपने बाकी सब बता दिया है। तो द फ्लोर इज नाउ ओपन फॉर क्वेश्चंस। अब हम फ्रंट रो से ही शुरू करते हैं। थोड़ा स्पीक इन द माइक। Sir, Rishi from Hindu Business Line. Just one clarity. At 2 o'clock, the Uttarakhand CM tweeted on X saying that the work to lay the pipes has been completed and soon the workers will be brought out. Now, right here you have said that still 2 meters are left. Could we get more clarity how much pipe has been laid? Because you clearly said that right now the breakthrough has not happened and we are still 2 meters away. Are we 2 meters away from digging it, or are we 2 meters away from, pushing the pipe and reaching to that spot? Can you give us more clarity on this? When the Honorable Chief Minister tweets and says soon a breakthrough will be achieved, there is no need to start assuming कि वो soon कब होगा. That no, pipes have been laid. Pipes have been laid since then. What has happened is pushing the pipes. While pushing the pipes, again obstacles have been encountered. I think मैं पूरे वक्त पिछले 5 दिन से यही एडवाइस दे रहा हूं सबको, ठीक है? Don't take things literally. आप बाल की खाल उधार रहे हैं इसमें. It has not happened this way so far. बाल की खाल उधारना नहीं है यहां पर हमें. नहीं, please. Let me clarify. If I am speaking, don't interfere. Right? इसमें बाल की खाल नहीं उतारनी है. ये लाइव्स के साथ we are working. We are playing with lives. 41 जाने हैं वहां पर. हमें सून 2 पाइप, आधा घंटा, 15 मिनट के ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए. We are not, ये देता ही नहीं है किसी तरह का वो कि gives us the scope or permission to debate this. What is the debate in this? 2 बजे अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया, भाई उनके भी इंसान हैं वहां पर, उनकी भी उम्मीद है वहां पर, जैसे हमारी उम्मीद है यहां पर, आपकी भी उम्मीद है, हम सब एक ही देशवासी हैं. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. बहुत अच्छी बात है. कभी कम्युनिकेशन ब्रेक, कभी कम्युनिकेशन. We'll move to the next question. 91. No, I'm not insulting you in any way. No, I will not. Let me handle this my way. Right? First of all, I apologize. I don't want to this thing to tell you. Sir? Yeah, I agree. But I also want to advise you. I also wish to advise you that there is always scope for a little bit of a leeway here and there. We have been waiting for the better part of how much? 15 days now? 16 days now? Iske andar a couple of hours here and there doesn't really make a difference. Neither to your health, neither to my health. We are concerned about the nation, we are concerned about 41 lives.
Let's discuss that. सर दिस साइड ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से मेरा सवाल यह है कि जो आपने बताया लास्ट के 2 मीटर लगभग का हिस्सा रह गया है, क्या अभी उसमें कोई ऐसी स्थिति है कि काम रुका हो या कुछ ऐसा मिला हो, या काम चल रहा है सीधे और उसका पर्टिकुलर एक अनुमान टाइम की अगर उसमें कुछ दिक्कत नहीं आई तो इतने टाइम में हो जाएगा? मैं उम्मीद रखता हूं कंप्लीटली कि कोई इसके अंदर अड़चन नहीं आएगी अब, बट एज वी आर अवेयर इतने दिनों से इस 58 मीटर से 60 मीटर जो हम जा रहे हैं, पहले भी बहुत दफे हुआ है कि 22 से 24 और 24 से 26 के बीच में अड़चनें आई हैं, एंड दैट इज डिलेड अस स्लाइटली. तो एज आई टोल्ड यू कि आवाजें आ रही हैं उस पार, ये ड्रिलिंग की आवाज आ रही है, खोदने की आवाज आ रही है, विच मीन्स वी आर वेरी वेरी क्लोज. For my technical knowledge, but I'll rely more on Vishal Chauhan साहब to confirm that. Once you have got through, जब थ्रू एंड थ्रू हो गया, रोशनी दिख रही है आपको एक दूसरी तरफ की, थोड़ा स्टेबलाइजेशन करना जरूरी है, ठीक है. और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये थ्रू एंड थ्रू मूवमेंट ऑफ 41 पीपल इज नॉट ए स्मूथ मूवमेंट. ये भी इसके अंदर भी अड़चन आएंगी. जब आप स्ट्रेचर को मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, तो देयर विल बी फ्रिक्शन, देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ रंबलिंग, और उसके वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है. उसको जाकर आपको दोबारा रिमूव करना पड़ेगा. तो टाइम पर ये होता रहेगा. प्लीज एक्सपेक्ट दैट एंड इट विल हैपन. इफ इट डजंट हैपन, वंडरफुल, दैट इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस. मगर ये चीजें होंगी. तो I'll ask चौहान साहब टू जस्ट टेल यू कि 2 मीटर का के अंदर क्या स्कोप है किसी ऑब्स्टिकल के आने. अभी एक आयरन पाइप आया था, उसको काट दिया गया है और अब हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं. और मैं आप ही के उसको भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो मग गिरती है ये स्लांटिंग वे में गिरती है. तो अगर वो ऊपर अगर ब्रेक थ्रू की स्थिति बनेगी, पाइप को हमें उसके आगे भी 1.5-2 मीटर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको ये भी देखना है कि ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर पाइप आ रहा है. तो उसके लिए हमें पाइप को लगभग 2 मीटर हमें बाहर भी निकालना पड़ेगा, जिससे कि एनडीआरएफ की जो टीम है या लेबर है उनको पाइप तक पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो. तो इसी प्रक्रिया में थोड़ा अभी समय लग रहा है, लेकिन जैसे सर ने कहा कि वी आर क्लोज टू इट. Yeah, next question, please. Go ahead. Sir, do we owe the, the mission has accomplished this breakthrough? Is it because of the right hole miners? Because how much helpful their work was? How much helpful their work was? Because right hole miners begin their work just one day ago, and how much distance they were able to drill it manually? What road? Yeah, related to that. हाँ, संतोष बोलो. उनको सर कैसे इजाजत दी गई है? नहीं, come again. I couldn't get your question exactly. वो इलीगल है एरिया में, तो उनके लिए क्या कोई स्पेशल प्रोविजन के तहत उनको इजाजत दी गई है? I couldn't get that. He says right. I am not in a. I don't think you are. Rat mining may be illegal, but a rat miner's talent and experience is not the same. विशाल जी बोलिए. NGT has probated coal mining by that technique. NGT has probated coal mining by that technique in 2014. Hold on. 1 second. NGT has probated coal mining by that technique, going into the tunnel kind of a thing and getting the coal out. But this is a skill used for in construction site. They are not always very comfortable situations. So in fact not only these people but जो जिन लोगों ने जो गैस कटर से उसको काटा है, वो भी एक बड़ा डिफिकल्टी जॉब था. 1-1 घंटे काम करते थे, बाहर निकलते थे. तो ये स्पेशल सिचुएशन है, लाइफ सेविंग सिचुएशन है. बट व्हाट यू आर सेइंग इज कोल माइनिंग इज प्रोवेटेड. They are technicians. They are technicians helping us. Yeah, actually, ये colloquial use है. This is a colloquial use which actually, if I may say, more in the media, it is coming out. It draws interest. I agree with you. I also used the term yesterday. But as I said in the beginning, it is their talent which is being used. It is their capability which is being used, not this aspect of. Yeah. Absolutely. Times of India. Just a second, Deepak, just hold on.
I'm sure Chauhan Saab may have something to say on that. How difficult was it to go in and do this kind of a work manually? Well, I can only imagine it. I am hugely claustrophobic myself, right? I can tell you, I have been through a 60 to 70 meter, 1 meter drum pipe in Siachen Glacier. It was mind-boggling, I can tell you. I came out at the other end traumatized, virtually. Now here you have to have a special talent for a thing like this. And that's why मैं तो सलाम करता हूँ. Salute a person who can go in, stay there for that much time and do physical activity. Not only physical activity, actually even work with gas cutters inside. जो चौहान साहब अभी कह रहे थे कि people have been doing this in the last couple of days. In this enclosed 1 meter space, जाकर अंदर crawl करके hardly any air to breathe, and you are carrying out work with heat implements. I think they really need a salute from our side. Yeah. Sir, I have a question for Chauhan sir. Everyone is talking about the technology that the export workers are using, but who actually hire these people? Is it an HIDCL or the contractor himself? No, sir, that is important to understand, because then we come to know how exactly it is happening. And second part, sir, why it was decided that they should be used rather than gangmen or others? Last question, don't take it otherwise, because now fortunately we will get everyone out. Now questions will be raised about this entire tunnel, the security, the quality, what kind of action the government is taking. Though I know you are from NHAI, but since you are handling this entire operation from here, that's why I'm asking, sir. Can I just take the first part of your question? I think it's a very interesting thing that you have raised. कि किसने इनको बुलाया, किसने इनको हुक्म दिया, who has taken on the responsibility, etc. I want to tell you this from this angle of all of government approach. देखिए मेरा फोन जो है ना पिछले 5-6 दिन से रुका ही नहीं है बजना. एक तो आई डोंट नो somehow NDMA के वेबसाइट पे मेरा फोन नंबर है. I'm surprised it is there at all. I should remove it actually from there. ठीक है. So anyone and everyone who had an idea in India, कि he became my friend, and I was getting constant calls. Now, I have an old experience of handling good friends from the media and everyone before, and I always followed this attitude that always pick up your phone, because you never know what kind of an idea is coming. तो पूरे भारत से ये आइडियाज आ रहे थे, and everyone was, जैसे कुछ दिन पहले everyone was a cricket expert on World Cup, उसी तरीके से everyone was an expert on tunneling in the last 5-6 days. And I think that has led, and our willingness, I would say the willingness of the government of India, पूरी सरकार की ये willingness to सुनकर और फिर searching for talent, searching for options, searching for methods, enabling it, I think it's a massive achievement if you really look at Indian governance. I leave it to Vishal Chauhan Saab to tell you about who finally actually gave this order. तो जैसे मैंने कहा, एक डेली कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जो सेक्रेटरी रोड उसको चेयर करते थे, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी मैंने अभी आपको नाम पढ़ के सुनाए थे, वॉलंटरली उन्होंने या तो CSR फंड से या जैसे भी है वो खर्चा उन्होंने अपने ऊपर लिया है. हालांकि उनको ये भी कहा गया है कि आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, जिस भी टूल, जिस भी इक्विपमेंट या जिस भी मैन पावर की आवश्यकता है उसके लिए प्रोविज़न किया जाएगा, लेकिन आप अभी काम कीजिए. तो इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर्स की हैं, और उन्होंने आगे बढ़ के इसमें काम किया है. तो मुझे नहीं लगता जब हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात करते हैं तो खर्चा इधर से हो या उधर से हो, वो सरकार का ही होता है और सरकार के ही दिशा निर्देश हैं कि, और इसमें जैसे अगर एयरफोर्स के प्लेन उड़ाने की बात है या कोई ट्रेन चलाने की बात है, तो इतना डेलीगेशन इस ऑपरेशंस और इतनी प्राथमिकता इस ऑपरेशंस को दी गई है कि इसको एक रेड टेप ब्यूरोक्रेटिज्म जिसे कहते हैं उसको काट के क्विक निर्णय इसमें लिए गए हैं. तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस ऑपरेशन में. सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से. मेरा सवाल ये है कि चूंकि अब ऑपरेशन लगभग संपन्न होने को है, तो इससे क्या लर्निंग हमें मिला, और चूंकि कई सारे ऐसे टनल के काम जैसा कि आपने कहा NHPC में भी होता है, हाईवे करती है, अलग अलग एजेंसियां करती हैं, तो क्या आने वाले दिनों में इस से सबक सीखते हुए क्या विशेष एहतियात या विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर कोई असर पड़ेगा फ्यूचर में टनल वर्क के ऊपर? I will pass it on to Chauhan Saab also to answer that from the angle of his ministry and his experience. मैं समझता हूं कि आपने प्रधानमंत्री साहब का
10 पॉइंट प्रोग्राम देखा है ऑन 10 पॉइंट एजेंडा ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट? अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए इसको, एनडीएमए की वेबसाइट पर है। 2016 में एशियन मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर की थी, जिसके ऊपर डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस के ऊपर, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया था। उसके अंदर वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज दिस इशू ऑफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम ऑल डिजास्टर्स। ठीक है, बिफोर वी प्रोफेशनलाइज डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, 2005 के बाद हमने प्रोफेशनलाइज किया था। माननीय प्रधानमंत्री ने इसको गुजरात में ऑलरेडी प्रोफेशनलाइज कर दिया था बहुत हद तक, बट हियर इन 2016 when he gave this out, this has become like a mantra for disaster management around the world, right? Now इसके अंदर एटलीस्ट मुझे मालूम है कि एनडीएमए में हम क्या करते हैं। आई एम श्योर इन मोस्ट अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द सेम थिंग इज हैपनिंग। वी लुक एट एवरी क्राइसिस। उसके बाद हम, जैसे ये बालासर का रोड रेल एक्सीडेंट हुआ था, आई थॉट दिस वाज एन एग्जाम्पल जहां से सबसे ज्यादा लेसन्स निकले हमारे लिए। हमने एक मीटिंग की एनडीआरएफ के साथ, हमने सबसे पहले इंडियन रेलवेज के साथ की मीटिंग और उनसे समझा कि इस तरह के डिजास्टर्स किस तरह से हो सकते हैं, व्हाट इज द स्कोप, क्या कर सकते हैं, हु ऑल शुड बी कीप रेडी, कैसे रिहर्स करें, कैसे प्रैक्टिस करें। यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि यूपी में हमने पहला जो उस एक्सीडेंट के बाद वी हैड द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, मॉक एक्सरसाइज जो हम करते रहते हैं, उसके अंदर हमने पहली दफे एक रेल एक्सीडेंट का सिनेरियो बनाया। तो यू कैन सी द सीरियसनेस फ्रॉम इट कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, इसका मुआयना करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड इनवेरिएबली वी ट्राई एंड ड्रॉप सम गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर। एनडीएमए की अगर आप वेबसाइट पे देखें तो बहुत आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। सीबीआरएन की पूरी गाइडलाइंस हमने अभी बनाई थी G20 के लिए। तो सिमिलरली आई एम श्योर वी विल मेक सम मोर गाइडलाइंस फॉर दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर टनल रेस्क्यू, जिसके लिए अभी गाइडलाइन नहीं है, बट ऐसी गाइडलाइन जरूर बनेगी इन द फ्यूचर। मैं एनएचएआई के विषय में कह सकता हूं कि एनएचएआई ने ऑलरेडी इसमें सभी टनल्स का ऑडिट का काम पुनः शुरू किया है और इसके अंदर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और कोकण रेलवे कॉरपोरेशन, जिनको टनलिंग का काफ़ी एक्सपर्टाइज है, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और जैसे सर कह रहे हैं कि इससे भी लेसन लिया जाएगा, इसमें कैसे हमारे एसओपीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कैसे हमारे डिज़ाइंस को और बेहतर किया जाएगा, जिससे इनको और अधिक सुरक्षित बनाया जाए, इस पे काम किया जाएगा। लेकिन जब ये ऑपरेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी। देखिए कांस्टेंट प्रक्रिया है, लेकिन अब ये ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें कुछ और भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो इसको पुनः एक बार एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एजेंसीज, क्योंकि कोकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इंडिपेंडेंट है हमसे, तो एक बाहर की एजेंसी जब देखती है तो और डिस्पैशनेट होकर देखती है, तो वो भी काम हम लोगों ने शुरू किया है। अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का। Yeah, second last row, please. Sir, Saptarshi here from Hindustan Times. Sir, the workers got trapped only after debris from top of the tunnel fell. Today also you were giving us an update about the vertical drilling process that is ongoing and the update on it. So were there any risk involved and why did the concerned agencies want to go ahead with vertical drilling? In fact, 2 of the rope team agencies were working for vertical drilling. So yes, I want to understand, were there not risks involved? Yeah, he said. Why we continue with vertical drilling? Why we are continuing? I'll give you a brief thing. We'll ask John Saab for his technical expertise on this. I think I explained in the beginning. जब तक आखिरी, I'm sorry मैं आपको फौज के बहुत एग्जाम्पल देता हूँ, बट याद रखिए लीडरशिप में इस तरह का अभियान जब चलता है, आखिर में फौज में हमारा सिस्टम है, हम एक सिग्नल देते हैं कि अब सक्सेस मिल गई, वी हैव सक्सीडेड, राइट? वो सिग्नल नहीं मिला है, अभी तक सिग्नल नहीं दिया है हमने कि एवरीथिंग इज ओवर। वो सिग्नल तब होता है व्हेन एवरीथिंग इज सिक्योर। अब हम एक जगह पर रोक लें अपने जो एफर्ट्स, जिसमें हम काफी अच्छा किया है, हमने 40 मीटर गए हैं अंदर और बाकी चल सकता है उसके अंदर, तो वी हैव मेड श्योर दैट वी आर नॉट स्टॉपिंग। अभी शायद थोड़ी देर के लिए काम रुका हो ताकि थरथराहट हो, वाइब्रेशन ना हो उस इलाके में, बट वी हैव कंटिन्यूड द एफर्ट एंड द ऑप्शन इज रिमेनिंग
ऑप्शंस रिमेन टिल द लास्ट कंप्लीशन. ये आधा छोड़ना नहीं है काम, कंप्लीशन ऑफ द मिशन. जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा ये सब बेशक ये सब बंद हो जाएगा. आपकी ये जैसे जब खाने की सप्लाई भी भेजते हैं उस समय भी हम ड्रिलिंग ऑपरेशन को बंद कर देते हैं. तो यही है, जब एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी और लोगों को बाहर से लेके आएगी तब उस समय ये नहीं होगा. लेकिन अभी आई थिंक वेट एंड वॉच पे है. और लेकिन ये ऑप्शन हम इसे जब तक पूरा ऑपरेशन समाप्त नहीं हो जाएगा हम किसी भी ऑप्शन को नहीं छोड़ेंगे. आखिरी सवाल फ्रॉम द थर्ड रो. Yeah, we can hear you. Okay, that's fine. Is there a prevention strategy as far as preventing these kind of incidents in future is concerned, that maybe the teams that have been concerned with the operation have thought of or specifically looked into, so that such kind of incidents detailed, they should not occur anytime in future? I'm sure there will be a technical audit subsequently, as already announced. A technical audit will be there. After any such incident, these things are natural. Till the time that you are in rescue, till the time people are still there, people are in their lives are endangered, there are people involved in rescue and there are people being rescued. Till then we don't involve ourselves in that. Okay? But the moment this is over, I'm sure no one is going to waste any time. An effort will immediately begin to learn what are the lessons learned from this and how to prevent it in the future. थैंक यू वेरी मच. इसके साथ ही आज का ब्रीफिंग हम यहीं समाप्त करते हैं. धन्यवाद. Thank you very much. Personally, it's been a wonderful experience working with the media here. It's been a very, very mature way of dealing with things. Thank you. Well, a quick update there from the NDMA press conference that's taken place a short while ago. The breakthrough is almost there. 2 meters of these workers there still left, and for the pipes to be pushed in still left. So, waiting for those final signals, but the nightmare for these workers nearly about to end at this point of time as we speak. And the NDMA member, they're clearly indicating the whole of government approach, which was important, especially when it comes to the rescue and relief operations. Also, the role that PSUs had to play, especially in helping various agencies come together and helping this particular rescue operations take place. What we hear at this point of time, a 2-meter, drilling is or a stretch that's still left, and every department having a role to play in it. Also, it's mission accomplished largely due to the rat hole workers, who've worked tirelessly, non-stop over the last few hours, especially using gas cutters, using various other technologies, digging deep there. Helping especially in this rescue operations, and they have moved from almost 36 to 45 meters. That's the vertical drilling that continues. Also the horizontal probe that continues there non-stop, and there is an Indian Air Force Chinook aircraft helicopter there waiting. If need be, the airlifting of the workers post the rescue will take place. But the NDMA member clearly indicating that post 4:30, the helicopter would not take place and the airlifting would take place tomorrow early morning. He also spoke about the various players, the various people who have been working tirelessly non-stop in this rescue operations. If one takes a look at the people behind this rescue operations, they have been working tirelessly. We spoke about the Prime Minister, the Chief Minister of the state, but people there on the ground who have been working tirelessly, the DG of NDRF, the BRO Chief, the Zozila Tunnel Project Head, Lieutenant General Harpal Singh, the NDMA member who's been briefing the media, the highway infrastructure body, the director of it, also the secretary to the Uttarakhand government, the international tunnel experts, the micro tunneling experts, all these involved in this rescue operations. Akshay Dongre, our correspondent, tracking that NDMA briefing for us, joining us now. Akshay, good evening. Akshay, we were celebrating. We had started celebrations, so we felt that a big breakthrough was almost done. But a pause now with this 2-meter, deadlock still existing. How does it change things,
especially on the ground? Anil, as we were speaking earlier as well regarding the news of the breakthrough that has started to come, certainly when the tunnel is almost when the workers are almost through the rescue operation, the people who are doing the rescue operation, and they're almost through inside the tunnel, yes, it is a moment of celebrations, but 2 meters is relatively a short span of distance as far as the final breakthrough is concerned, and that's why the officials who had briefed the country about this rescue operations, they also said and they clarified that there is no hurry because there are people who are working in the tunnel, there are people who are trapped inside the tunnel. So while they have already gone through about 50 to 58 meters inside the tunnel, we can wait for 2 more meters before the celebrations actually begin. Because earlier as well, this has happened that there were sort of assumptions by the statements that were given by the ministers and the officials, and they were assumed wrongly that the work is almost done. However, it was far from truth, and that is what exactly the officials are saying right now. That right now, yes, we have almost reached there, but still we have not gotten exactly to the place where the workers are trapped. So that is the situation right now. You were rightly mentioning about the Chinook helicopters that could have been used today to evacuate all the people had they come earlier, had they come before 4:30 p.m., but because of the weather conditions, because of the lightning conditions, the Chinooks will not be taking the flight after 4:30 p.m. That has been an assessment that was made also. Given the fact that the condition of the people who are trapped inside the tunnel will be very, very delicate. So if there is an emergency, the workers can be transported to overnight in ambulances to hospitals in Rishikesh. Okay. That is far from there. That is about a few hours from the tunnel location. However, that is a possibility. And but right now, as far as that site is concerned, there are already healthcare facilities being prepared for the worker. They have been prepared rather, and they are ready on a standby to receive the workers as soon as they are brought out. And that is what the experts have been saying. Akshay, thank you. Appreciate you joining us. It's the last leg of operations there in that Uttarkasi Tunnel rescue as we speak since this afternoon. There were moments of joy that were brought about. Still 2 meters of drilling left. Vertical, horizontal, all operations right now continue there on a war footing there in the hilly state of Uttarakhand. We'll get you more updates, non-stop coverage on that rescue operations, especially on the tunnel collapse in Uttarkasi continues here. Time now for us to take a breather here. On the other side, news and updates continue. Stay with us on DD India. अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Turning crisis into opportunity, transforming ideas into action, stories of real change, tales of sustainable solution. This series is going to tell stories of such change makers. Watch Change Makers on DD India.
platform for the developing world, amplifying the voice of the Global South with a focus on the growing economies, resolving the conflict, showcasing the culture, tradition, heritage and diversity. Watch Voice of the Global South at these times on DD India. We just don't bring you the news as it unfolds. We get to the heart of the matter. We don't just present facts, we demystify complex social, political and economic events. We break stories that shape the world's present and future because you deserve the truth. I am Tanvi Taneja from New Delhi. I'm Ollie Barrett from London. I'm Nick Harper from Washington, D.C. Join us on DD India Global Monday to Friday at these times. Buy Bajaj 5-star water heater and get electric kettle free. Special offer. Get installation free. Inlet and outlet tube free. Only at Ratna Fan House, T Nagar, Chennai. மோடி அரசின் உத்தரவாதம் ஒவ்வொரு ஏழைக்கும் இலவச சிகிச்சை 55 கோடி மக்களுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வரை இலவச சிகிச்சை அளிக்கப்படும் நமது லட்சியம் வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம் India that invites, land of possibility, teeming with opportunities. Watch India Ideas each Thursday 8 p.m. only on DD India. Wherever news breaks, whatever it takes. Connecting corners, cutting across continents. Stories that matter from across the globe. Accurate, authentic journalism that serves you right. From politics to glamour, from sports to world affairs, with a fusion of aesthetics and substance. Introducing news in a new avatar. Experience the world through a new lens. Stay tuned to DD India for an exciting journey beyond borders. Live from New Delhi, you're watching DD India Live. We'll get you top stories from India and the world. I am Tanvi Taneja. Coming up in the next 30 minutes. Rescuers near breakthrough to get 41 trapped workers out in India's northern state of Uttarkasi. Medical team on standby. Israel-Hamas truce extended by 2 days with 33 Palestinians, 11 Israelis released on day 4. UN chief hopes extension will lead to more much-needed aid deliveries. North Korea's new spy satellite photographs White House and Pentagon. US and North Korean ambassadors engage in heated debate at the UN Security Council.
So first, updates on the tunnel rescue collapse in India's northern state of Uttarakhand. Efforts are on in full swing to rescue these 41 workers trapped inside this under-construction tunnel in North India's Uttarkasi. Ambulances and medical team are on standby at the site. Updating on the rescue operations underway at the Silkyara tunnel in Uttarkasi, India's government said that rescue efforts have reached a near breakthrough. Before anything else, we are near a breakthrough, but not yet there. Teams जो हैं हमारे rat miners, experts जो हैं बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी enclosed space में कर रहे हैं और साथ में आर्मी इंजीनियर्स ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है. They have been able to take it to 58 meters, which is a phenomenal achievement. The Indian government also said vertical drilling has reached 45 meters and that such drilling is important as a backup option. वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई. अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है. ऐसा कुछ नहीं है. जितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस अपनाए हुए हैं अभी तक. So India's government added that it will take almost 3 to 4 hours from now to evacuate all the workers. ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल. तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा. अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे. And our correspondent tracking the story, Akshay Dongre, is with us live now. Akshay, yes, we are all hoping for this breakthrough now in about 3 to 4 hours, as informed by Atta Hasnain there in that press briefing. So fill us in, what arrangements have been made for the miners in terms of medical teams, trauma teams, ambulances and so on immediately after they've been rescued? Well, Tanvi, the officials that were present here of the National Disaster Management Authority have said that once the breakthrough has been achieved, whenever it happens, after that, we are assuming that about 5 minutes it will take for every worker to come out. So, given the fact that there are about 41 workers, there are 41 workers inside, there will be stretchers, there will be technical equipment, and if we look at the entire operation, it is going to take about 3 to 4 hours. However, there is no certainty right now that when the breakthrough will actually take place, because 2 meters of that particular debris that is still there, we certainly don't know right now that whether there is metallic debris inside, what exactly is there. But one thing is very clear from the Indian government's point of view, that we don't have to be overconfident, we do not have to jump the gun, and we do not have to start celebrations too soon. It is a very, very sensitive situation. It is a tunnel where about hundreds of workers are right now working from almost all other major rescue agencies of the country, as well as security agencies, be it the state disaster relief agencies, the national disaster relief agencies, the army, air force, the NDMA, all of the agencies, the healthcare workers, the psychologists, they're all inside the tunnel trying to help the workers who are trapped inside, but their safety also has to be kept in mind, and that is why whatever work is happening is happening keeping in view the safety of not just people who are inside as a priority, but also the people who are working inside. So we are yet to reach that particular 2 meter distance as far as the tunnel rescue operation is concerned. It will happen, but with keeping all the safety measures in mind, and that is what the officials here are saying. So the helicopters that had come, the Chinook helicopters that had come for the evacuation of the rescuers, they will have to now wait
wait till tomorrow morning because they cannot take off after 4:30 p.m. The weather conditions are not good there in Uttarakhand. The weather changes and there may be extreme weather conditions as well, and that is why after 4:30 p.m. the government has decided to not actually evacuate the workers. The evacuation will take place tomorrow morning after sunrise. Until then, there is a facility there, a 30-bedded facility that has been prepared. It will be expanded as and when the workers are getting out, and all the preparations will be there on the site. But in case a better healthcare facility is required, then there are all the arrangements in place to transport the workers after they are rescued from the site to Rishikesh hospitals via ambulances through the night. And a medical team is on standby at the site as well. Absolutely. Yeah. So, yes, so you have been... Yes, medical teams are there, psychologists are there. Yeah, so I was about to ask you, Akshay, what do we know about the morale of these 41 miners still trapped in the tunnel? What was briefed on their mental health conditions? Well, today's briefing did not actually comprise of the mental health conditions of the workers, but in the previous briefings, yes, it has been mentioned that they are taking care. The government is taking care of the psychological, physiological, all sort of health conditions of the workers who are inside, because it becomes extremely important that after 17 days in pitch dark, where the workers have been there trapped in a small area with absolutely no hope of getting out of that particular area. They have gone through trauma. They will have to be monitored for about 48 to 72 hours. There will be psychologists on standby. They have already been speaking to them, trying to keep their morale high, because it's unimaginable what the workers are going through even right now. From what we have got to know from the experts is that they have reported back that now they can they have rather started hearing the sounds of the work, the rescue work that is going on inside the tunnel. So that's the good news, but yet it will be too soon to say that the breakthrough has been achieved, because each and every inch, each and every centimeter the workers are there fighting to get through inside that tunnel, and 2 meters is a distance that is yet to be conquered by the agencies that are there. So that will take place very soon, but we have to be very, very cautious while reaching there. Akshay, what will happen from now on? Every worker, every trapped tunnel worker will be rescued separately, and how long will the rescue operation for each worker take? What has been briefed regarding this? Well, as far as the experts are concerned who are here from the agencies that are in fact involved in the operation, they have told us that it will take about 3 to 5 minutes for every worker to get out of the tunnel, because they have become weak, they have not seen sunlight, they are scared, and they will have to come out very carefully not to hurt themselves. So it will take about 5 minutes for each of the worker to come out, given the fact that there are 41 workers, there will be equipment, there will be stretcher that will be going inside, there will be other equipments, so it will take about 3 to 4 hours as according to the experts for the rescue operations to end from when it begins. So once the breakthrough is achieved, after that about 3 to 4 hours more for the last worker to get out of the tunnel. Okay, Akshay, looking at the bigger picture, this has been a 17-day long rescue operation and it's still not over. Has the success in this operation been achieved with the help of rat miners? Well, not exactly, Tanvi. In fact, as we were hearing the briefing of the officials, they were saying that every agency of the Government of India, almost every ministry of the Government of India has been involved, be it the Health Ministry, be it the Road Transport Highway Ministry, be it other ministries that could be taking part in the rescue operation. So every centimeter, every meter that has been achieved by the rescue workers, they have been significant achievements, because we have seen that the army has been manually drilling. There are rat miners who have gotten inside. Then there were earlier auger machine that was working continuously. So all in all the agencies have played their role for this rescue operation. It will be wrong to just give one of the agency or one of the teams of the rescue workers to give all the credit to. And in fact,
the entire point of giving credit comes later, once the rescue work is completed and once the workers who are all inside are safe and they have been sent to the hospitals and they are released from the hospitals after all the mandatory checkups that will take place. So from now on, what we are gonna see is the 2-meter distance that is still left, that will be very carefully gone through. In the last 24 hours, the rescue workers have gone about 10 meters inside the tunnel. So from about 48, they have reached about 58 meters inside. So that has been a significant achievement. In fact, even the experts here were saying that the manual drilling of the tunnel, the horizontal one, also took place like a machine was working. So that has been